So we have completed the polymorphism, right? कर लिया है ना polymorphism? Autophagic क्या नहीं लिखा हमने? Residual what? क्या नहीं लिखा? Autophagic vacuoles. हाँ? अच्छा. So we're getting functions of lysosomes. का टेस्ट है ना? आ रहे हो? शिवम ऑनलाइन पोर्टल ओपन करके देखो. अभी अपलोड करा है एक नाइट्रोजन साइकिल का करा है और एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का करा है. देखो हुआ कि नहीं. अदरवाइज वो कह रहे हैं कि अभी शाम को अभी क्लास के वीडियो के नीचे फिर से अपलोड कर देंगे. हाँ हाँ क्लास तो आपकी 4:30 से है ना. क्लास होगी. क्वेश्चन नंबर 1 के 5 सेगमेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 के 3 सेगमेंट, क्वेश्चन नंबर 3 के सेगमेंट. 3 क्वेश्चन है आप लोग. ठीक है, लाइक सेक्शन 1 ओनली. ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में देख लेना. ठीक है, जब भी चलेगा. चलो राइट ऑन फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम. फर्स्ट इंट्रासेल्युलर डाइजेशन. फर्स्ट इंट्रासेल्युलर डाइजेशन. Within 2-degree lysosomes, within 2 degree, sorry, secondary lysosomes, sorry, within secondary lysosomes, the ingested material, or those resulting from autophagy, slash phagocytosis are subjected to reaction of many hydrolases which break the components of cells, such as carbohydrates are hydrolyzed into monosaccharides and proteins are digested into peptides. Sorry, proteins are digested into amino acids or peptides, and proteins are into peptides or amino acids. Next, autophagy. Lysosome brings about the reservation and turn over the cell components full stop. Cytoplasmic organelles become surrounded by membranes of SCR
and lysosomal enzymes and lysosomal enzymes are discharged into autophagic vacuoles. Autophagic vacuoles. ब्रैकेट में लिखो autophagic vacuole which are formed through primary lysosomes. Which are formed through primary lysosomes around old or dead organelles. Around old or dead organelles. Bracket close. And finally digest them. The digested food या cell component, digested food or cell component is used in the growth of other parts. In the growth of other parts. Next, removal of cell slash obstruction. Next point है ये third point. Removal of cell slash obstruction or extracellular material dash during development by bringing about shedding or remodeling of tissues with the removal of whole cells after digesting by lysosomal enzymes. Out of the cells, lysosomal enzymes, out of the cell through the process of exocytosis. Next, release of thyroid hormone. Dash thyroid hormone bracket में T3 and T4. Thyroid hormone bracket में T3 and T4 are released from large protein molecules called thyroglobulin which stored within the thyroid follicles which is activated by such enzymatic actions of lysosomes. Next, fifth है ना ये, 6 कौन सा पॉइंट है? बॉडी डिफेंस. फिफ्थ, बॉडी डिफेंस. leukocytes granules are of
are of lysosomal in nature. Lysosomal in nature. Lysosomes of leukocytes devour. Lysosomes of leukocytes devour. DEVOUR. Devour foreign proteins. Lysosomes of leukocytes devour foreign proteins, comma, toxic substances, toxic substances, bacteria, and other microorganisms by neutralizing or engulfing them, by neutralizing or engulfing them, and finally, and takes part in body defense. And takes part in body defense. Next, germ cells and fertilization. Germ cells and fertilization. Such as sperm license, such as sperm lysine. Lysosomal enzyme used for lysosomal enzymes used for breaking limiting membrane of X, breaking limiting membranes of X, as the acrosome of sperms या spermatozoa, as the acrosome portion of sperm can be considered as specialized lysosomes, can be considered as specialized lysosomes, as they contain acids named hyaluronidase, hyaluronic acid, hyaluronidase, and acid phosphatase, and acid phosphatase. इसी पॉइंट पे स्टैंडर्ड चेंज करके लिखो, एंड हायर एसिड फॉस्फेटेज. नेक्स्ट, इन एक्स लाइसोसोम प्ले role in digestion of play important role in digestion of not required store reserve, not required store reserve. Next, genetic changes. Next, genetic changes. The inactivity of lysosomes. Right, wait. The inactivity or overactivity of lysosomal enzymes, such as nucleases, may harm the genetic material, or cause the mutation, chromosome breakage, which cause abnormalities, Last लिखो,
Osteogenesis. Last, osteogenesis. At the time of the formation of bones, at the time of the formation of bones, from cartilage, from cartilage, and during remodifications of and during remodeling of the bones, and during remodeling of the bones, comma, lysosomes of the osteoclasts, lysosomes of the osteoclasts cause breakdown of existing matrix, cause breakdown of existing matrix, so that it may be replaced, it may be replaced with the new cells, with the new cells. Diseases we have already mentioned, right? Lysosome में कोई doubt? Just read the lysosome का function. Ask me if there is any doubt. कोई doubt? Degradation. जो थायराइड हार्मोन की जो आपकी थायरोट्रोपिन सेल्स होती है ना, ये जो थायरोट्रोपिन जो सेल्स होती हैं, दे आर एक्चुअली, सो वी नो दैट जो थायराइड होता है वो आपका इनएक्टिव फॉर्म में होता है ना? तो इनएक्टिव फॉर्म में जो सेल्स की सराउंडिंग होता है वो हमेशा रिलीज नहीं होती, ठीक है, मतलब एक डिफरेंट अमाउंट में रिलीज होती है. तो जो आपकी थायरोग्लोबुलिन होती है वो एक पर्टिकुलर सेल्स के अंदर पाक रहती है, ठीक है. अब ऑफ कोर्स ये बाहरी सेल और एक अंदर की सेल, तो यहाँ पे आके लाइसोसोमल एंजाइम क्या करते हैं, वर्क करते हैं. सो विद द, और लाइसोसोमल एंजाइम का फंक्शन क्या है, डिग्रेडेशन, दैट इज दे डू. तो जब ये वाला जो आउटर लेयर है जब उसको डिग्रेड कर देते हैं तो अनर वाला जो इनर वाली जो पर्टिकुलर आपकी थायरोग्लोबुलिन सेल है वो कहती है कि ठीक है, नाउ देयर इज अ टाइम. एक्चुअली जब हम लोग जनरल साइंस में थायराइड पढ़ते हैं तो हम लोग यही पढ़ते हैं कि दैट थायराइड इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द थायरोकैल्सिटोनिन, और वो actually not only present in the form of inactive chemical but these cells also surrounded by that external membrane. तो उस membrane का digestion जो होता है वो lysosomal enzymes, ठीक है.
और कोई डाउट नहीं ना? चलो, मेक द हेडिंग माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, दिस इज अ न्यू सेल. हाँ, थैंक यू. माइटोकॉन्ड्रिया. Right now, the mitochondria was first observed by Altman, the scientist named Altman, in 1894. In 1894, as as bioblasts, as bioblasts. Underline that or do that inverted comma. As bioblasts. Full stop. Full stop. These structures were called slash named as mitochondria by the scientist named Benda, Benda, by the scientist named C. Benda, as mitochondria. As the term mitochondria is made up of two words. As the term mitochondria is made up of two words. First, mitose. That means thread. Mitose means thread. And chondrion means granule. Chondrion means granule. These are the energy converting organelle. These are the energy converting granule organelle present in all the eukaryotic cells. Present in all the eukaryotic cells. Next one. They were isolated by the Bensley and Horer, as they were isolated by Bensley and Horer in 1934. In 1934, by fractional centrifugation of ruptured liver cells. नेक्स्ट पॉइंट में लिखो. देखो, ये जो हम लोग सपोज दैट अभी अगर आपका दिस इज अ क्वेश्चन, अब देयर आर सो मेनी साइंटिस्ट वी हैव रिटन, सो अब यू गाइस मस्ट हैव दैट कंफ्यूजन. मैम इतने साइंटिस्ट थोड़े लिखते हैं इंट्रोडक्शन में, राइट? सारे वैसे भी आपने लिखोगे. देखो, ये आपका क्वेश्चन आया है, स्पेसिफिकली क्वेश्चन है आपका अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, सो स्ट्रक्चर आपका किसने देखा था? बेंसले एंड होरर ने. सपोज दैट नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया पे कोई क्वेश्चन है, तो आप इन दोनों में से कोई एक मेंशन कर सकते हो. तो इसका जो सेलुलर रेस्पिरेशन का फंक्शन था, अब स्पेसिफिकली पूछा जाए दैट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, तो इसने क्या बताया? स्ट्रक्चर बताया विद द हेल्प ऑफ द फ्रैक्शनल डिजिटलाइजेशन. इन्होंने सिंपल नेम दिया और डिस्कवरी की, तो ये आप कहीं भी लिख सकते हो. सो नाउ राइट इट डाउन. नेक्स्ट पॉइंट में राइट इट डाउन. Hegboom and his co-worker Hegboom and his co-worker Hegeboom and his co-worker in 1948 demonstrated that mitochondria is a site of cellular respiration. As
as they are specific for genus green stain, as they are specific for genus green. जब भी हम किसी पर्टिकुलर सेल को कलर करते हैं ना, स्टेनिंग देते हैं, सो माइटोकॉन्ड्रिया को जब तक आप जेनस ग्रीन में ग्रीन कलर की सस्टेन करते हैं, तो जब आप इसमें करोगे तो जो आपका एक्चुअली विजिबल कलर शो होगा वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया शो होगा. ठीक है, जेनस ग्रीन स्टेन. नेक्स्ट पॉइंट, it is difficult to observe it is difficult to observe mitochondria in the living cells because of their low refractive index, but they can be observed in the cells of in vitro cultured ठीक है. नेक्स्ट राइट डाउन डिस्ट्रीब्यूशन और लोकलाइजेशन या अक्रेंस जो भी. डिस्ट्रीब्यूशन, the mitochondria move autonomously in the cytoplasm so they generally have uniform distribution in the cytoplasm but in many cells their distribution is very restricted. First off, as their distribution and numbers of mitochondria in single cell, as their distribution and number of mitochondria in single cells are often correlated with types of function the cell performs. Next, स्टार बना के इस पॉइंट को लिखो. जनरली दिस पॉइंट जनरली मिस. Typically the mitochondria with many cristae या cristae are associated with mechanical and osmotic work situations where there are sustained demand for ATP, example muscle fibers, infolding of kidney tubule cells, and inner segment of rod and cone cells of retina, Next, make the heading.
Ultrastructure. Ultrastructure. Normally mitochondria is usually 0.5 to 1 micrometer, 0.5 to 1 micrometer in cross-sectional diameter, and its length up to 6 to 7 micrometer, and its length up to 6 to 7 micrometer. नेक्स्ट शेप छोटू से मिक दे डी मतलब अल्ट्रा स्ट्रक्चर में शेप या फिर मत भी लिखो लिखो द माइटोकॉन्ड्रिया में बी filamentous or granular in shape, may change depending upon the physiological condition of the cell, may change depending upon the physiological conditions of the cells. It is usually that the common shape of the mitochondria, the common shape of the mitochondria is cylindrical, comma, sausage shaped, comma, sausage shaped. It is spherical, full stop. Although it is spherical in yeast, and also bracket or clock shaped in other organelles, and also bracket or clock shaped in other organelles, Next point. The mitochondria are have a definite orientation, full stop. In cylindrical cells, इसी point में, in cylindrical cells, they are oriented in basal apical direction, parallel to main axis, while in leukocytes, they arranged radially with respect to the centrioles, Okay. Next, mitochondria are double membrane. Mitochondria are double membrane structure. The outer limiting membrane, about 6 nanometer thick, providing the outer cover, providing the external or outermost cover, and surrounds the mitochondria, Next, within this membrane, there is inner membrane, separated by the space of
separated by the space of 6 to 8 nanometer, 6 to 8 nanometer thick region called called intermembranous space, called intermembranous space. Inner membrane, next point, inner membrane projects into mitochondrial cavity, projects into the mitochondrial cavity, mitochondrial cavity as infoldings, as infoldings or finger-like projections, or finger-like projections known as crista, known as crista or crest, known as cristae or crest, which contain the F0 F1 particles, which contains the F0 F1 particle. Read the diagram. सब में बनाने की जरूरत नहीं है, किसी भी दो फिंगर, किसी भी दो क्रिस्टी में बना लो, ठीक है। अगर टाइम है तो सब में बनाओ, अदरवाइज कोई मैंडेटरी नहीं है। इस पर्टिकुलर F0 F1 पार्टिकल का अलग से स्ट्रक्चर पूछा गया है, आपके 2025 में भी पूछा गया है, बिकॉज एक्चुअली यहाँ पे ये आपका एटीपी सिंथेस करके क्वेश्चन आता है, ठीक है। सो विल ड्रॉ दैट सेपरेटली। जब भी आप ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना रहे हो, तो इफ यू आर एबल टू मेंशन ऑल द नेम्स ऑन वन साइड, इट्स अ वेरी गुड, दैट इज एक्चुअली वे ऑफ द, जैसे कि मैट्रिक्स राइबोसोम्स यहाँ लिखने की जगह इफ यू कैन राइट लाइक द राइबोसोम्स हियर, ठीक है।
जो स्ट्रक्चर्स हमने मेंशन करे बस वही स्ट्रक्चर यहाँ पे हैं भी. Done? Next, write down. The inner compartment, comma, inner chamber, or matrix space, which is filled with a dense homogeneous gel like proteinaceous material called mitochondrial matrix. Underline that, called mitochondrial matrix. जैसे कि सपोज दैट अगर आप पॉइंट फॉर्म में लिख रहे हो एंड यू आर नॉट राइटिंग इवन अ सब हेडिंग फॉर्म, तो जहां पे आपने आउटर मेम्ब्रेन के बारे में लिखा है जस्ट अंडरलाइन दैट मेम्ब्रेन, दैट पर्टिकुलर वर्ड. तो आपको हर पॉइंट को सब हेडिंग के फॉर्म में बना के नहीं लिखना पड़ेगा. ठीक है, जैसे कि लाइन हमने सपोज दैट ऐसे पॉइंट आपने स्टार्ट किया, अब एग्जामिनर वो पॉइंट एंड तक पढ़ेगा, उसके पहले ही आप उसको बता दो दैट यू आर टॉकिंग अबाउट दैट माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. ठीक है, हर पॉइंट को क्योंकि सब हेडिंग के फॉर्म में लिखना इट्स नॉट इजी, वो बहुत बल्कि सा भी हो जाता है. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स which contains it contains full stop, it contains lipids, proteins, circular DNA molecules, 55s ribosomes, and certain granules, also ions, Next, the inner mitochondrial membrane, next point की फॉर्म में लिखो, the inner mitochondrial membrane, inner की जगह outer लिख दो प्लीज, एक पॉइंट inner को जस्ट वर्ड करके लिखो, the outer mitochondrial membrane is permeable with limiting component and also having the porins, full stop. Its chemical nature is it contains 40% lipid and 60% proteins. It contains 40% lipids and 60% proteins. While, अच्छा देखो, write down, while the inner membrane is, देखो अच्छा, one more thing. So we know that your membrane of anything, है ना, जो कि आपका किसी भी चीज की जो membrane है, so that is permeable of most of the molecules. ठीक है, so अगर specifically I'm telling you this particular inner membrane is less permeable. So एक general constituent आपका होता है, मान लो lipid का और protein का. So that is the general percentage or the ratio of lipid is to protein in any kind of membrane, right? In any kind of membrane. So when that any cell membrane will be the less permeable or very selectively permeable, तो लिपिड और प्रोटीन के रेशियो में किसका रेशियो ज्यादा होगा? हम लिपिड का ज्यादा होगा. ओके अनुष्का, क्वेश्चन समझ आया? रिपीट करूं, कोई भी सेल मेम्ब्रेन है विच इज अलाउइंग द ट्रांसपोर्ट थ्रू इट. ठीक है, कोई भी सेल मेम्ब्रेन, एनी सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ मेजरली टू कंस्टिट्यूएंट्स, the lipid and protein. उसका particular ratio होता है. When we covering the plasma membrane, we have mentioned that. But simultaneously, we have also mentioned that the different kind of cell membrane have the different kind of permeability.
जैसे कि इसमें मैं बता रही हूँ आपको कि द आउटर मेम्ब्रेन इज वेरी मच परमिएबल, इट्स वेरी हाईली गुड परमिएबल, बट इनर मेम्ब्रेन इज लेस परमिएबल. आई एम टेलिंग यू इट्स अ वेरी सेलेक्टिव परमिएबल. क्यों? बिकॉज इनर मेम्ब्रेन इज स्पेस एक्चुअली सो मेनी फंक्शंस हियर. आधे काम तो यही हो जाते हैं. बहुत स्पेसिफिक काम जो होते हैं उसको क्रॉस करने की जरूरत होती है इनर मेम्ब्रेन को, राइट? ओके, सो इनर मेम्ब्रेन का भी कॉम्पोजिशन होगा ना लिपिड और प्रोटीन्स का, तो उसमें लिपिड कंटेंट ज्यादा होगा कि प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होगा? यस yes. कोई भी मेम्ब्रेन जो कि लेस परमिएबल है उसमें लिपिड, सपोज दैट नॉर्मल में आपका 40% लिपिड है और 60% प्रोटीन है, या कुछ भी रेशियो अपने आप से मान लो. माय सिंपल क्वेश्चन इज दैट if any cell membrane is less permeable or selectively permeable, the percentage of protein will be higher or the lipid will be higher? Lipid. Shivam, Aishali? Ma'am, I thought that it would be lipid because it will impart to the fluidity of the membrane. Okay, Manisha, would you please comment the lipid or protein? Why lipid, guys? It's a protein, na? Why lipid? Acha, first justify me why lipid. Yes, मतलब वो तो फिर स्पेसिफिक प्रोटीन्स हो गई ना. दैट विल बी द स्पेसिफिक प्रोटीन्स की वो किस टाइप का मटेरियल. अच्छा, उस जस्टिफिकेशन से तो ठीक है कि स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन है या पोरेंस है, बट इन जनरल लिपिड आपकी कैसी है? हाइड्रोफोबिक है. सो कोई भी मॉलिक्यूल सपोज दैट अगर उसके थ्रू नहीं आ रहा है, ऐसे कंसीडर करो. डिड आई मेंशन दैट व्हिच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टिंग? नो, आई हैव सिंपली सेड द नॉर्मल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट? सो प्रोटीन जो आपके कैरियर की तरह काम करते हैं वो स्पेसिफिक पर्टिकुलर कंपोनेंट, स्पेसिफिक सब्सटेंस की कैरियर की तरह काम करते हैं ना. जो नॉर्मल सब्सटेंस आपके होते हैं वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिपिड की कंटेंट के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं ना. अगर आपने स्पेसिफिक लिपिड कंटेंट को कम कर दिया और प्रोटीन कंटेंट को ज्यादा कर दिया, देन इट विल बिकम बहुत बहुत सिलेक्टिव परमिएबल हो जाएगी. वो बहुत कम ही चीजों को अलाउ करेगी. अच्छा, यू आर सेइंग दैट मैम आपने सेलेक्टिवली परमिएबल तो बोला था, राइट? सेलेक्टिवली परमिएबल इन शॉर्ट इसका मतलब है कि सारे कंपोनेंट वो नहीं अलाउ करेगी, बहुत कम चीजों को अलाउ करेगी. सपोज दैट अगर मैं बहुत लिमिटेड लोगों को अलाउ करूं तो बहुत कम लोग ही आ पाएंगे ना. सेलेक्टिव और लेस अलग अलग कंसीडर कर लो अभी, ठीक है? if I'm being very specific that if I'll only allow this people and that people, then I'll be very specific, then very few people are allowed to enter, है ना? So it will be the, if the membrane will be the less permeable or the selectively permeable, then protein content will be high. क्योंकि प्रोटीन उसका स्ट्रक्चर नहीं बना रही है. प्रोटीन क्या बना रही है? स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन बना रही है, जो कि कैरियर प्रोटीन है. चाहे आप फैसिलिटेड डिफ्यूजन में बात कर लो, चाहे आप एक्टिव में बात कर लो, हमेशा क्या हो रहा है? जब हम लोग नॉर्मल पैसिव डिफ्यूजन की बात करते हैं तो पैसिव डिफ्यूजन तो आपको कहां से हो रहा है? लिपिड वाले लेयर से हो रहा है ना. वो प्रोटीन से थोड़ी हो रहा है. और पैसिव में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आ रहा है. ठीक है, समझ आ गया? समझ आ गया? एक मेम्ब्रेन का ना छोटा सा डायग्राम, एक छोटा सा वीडियो है, आई विल शो इन दैट नेक्स्ट ऑफ द क्लास. उसमें क्या हम लोग देख रहे हैं? सपोज दैट यहाँ पे बहुत सारे आपके मॉलिक्यूल्स हैं, नॉन स्पेसिफिक. दे आर एक्चुअली ट्रांसपोर्टिंग थ्रू दिस. डाइजेशन में ये प्रोसेस हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि डाइजेशन कंसिस्ट सो मेनी बायोमोलिक्यूल्स. कोई भी बायोमोलिक्यूल जो है वो नॉर्मली किससे जाता है? यहाँ से ही जा रहा है, अगर वो बहुत स्पेसिफिक नहीं है तो. प्रोटीन ज्यादा होंगे, बट अगर बहुत स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स हमें ट्रांसपोर्ट करना है, ओनली देन. समझ आया? पक्का? ऑनलाइन? Yes, ma'am. ओके, चलो राइट डाउन. क्या लिखा? while the inner selectively permeable with 80% protein with selectively inner membrane is selectively permeable with 80% protein hello everyone, hello. That 80% protein and 20% lipids and 20% lipids. Next, inner mitochondrial membrane divides the, next point, inner mitochondrial membrane divides the mitochondrial matrix
divides the mitochondrial matrix into two chamber slash compartments, right, like this. outer chamber या ऐसे लिख लो या बेटर से ऐसे लिख लो, outer chamber and inner chamber, outer chamber and inner chamber. outer chamber इसमें लिखो it contain between two membranes and core of crista and core of Christi inner membrane में लिखो it filled with inner membrane में it filled with relatively dense proteinaceous material called mitochondrial matrix. Look at here. So that जैसे कि ये आपका inner, so what we are saying that inner mitochondrial membrane divide the matrix into two compartment or two chambers. ये हो गया between दो क्रिस्टी के बीच का जो स्पेस होगा that will be very limited, है ना. तो इसको हमने क्या बोल दिया, आउटर चेम्बर. और यहाँ वाला जो स्पेस होगा जहां पे अच्छा खासा स्पेस होगा जो कि बहुत डेंस होगा, इसको हमने बोल दिया इनर चेम्बर. ठीक है. नेक्स्ट, protruding from the inner membrane, there is a knob like structure. There is a knob, K-N-O-B. There is a knob like structure called F1 complex particles slash elementary particle each F1 particle is a complex of proteins and attached by a short protein neck to the F0 complex which have the assembly of hydrophobic proteins embedded within the inner membrane. देखो यही वाली तो इनर मेम्ब्रेन है ना. अब इसी में आपका ये आपका F1 है और ये आपका जैसे अटैचमेंट है, इसमें कैसे मैक्सिमम पार्टिकल है, हाइड्रोफोबिक, क्योंकि लिपिड्स आपको कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक. तो जहां जहां पर है वहां पे क्या हो पाए, वो embedded हो पाए. ठीक है. नेक्स्ट है the F0 F1 complex. The F0 F1 complex is a functional unit which is also known as ATP synthase. Because it is a structure responsible for ATP generation. Next point, the crystals greatly increase the area of inner membrane
the crista या cristae greatly increase the area of inner membrane so that in some specific cells such as liver cells mitochondria the cristae membrane is 3 to 4 times greater. The cristae membrane is 3 to 4 times greater than the outer membrane area. Last point, the different parts of the mitochondria shows different kinds of activities slash function which mainly dependent on their composition and specific enzymes they contain they consist in distinct compartmentalization write down enzymes in outer membrane enzymes in outer membrane first monoamine oxidase just नाम लिखना है इनके फंक्शन से कोई मतलब नहीं है बिकॉज अल्ट्रा स्ट्रक्चर जब पूछा जाता है सो हैव टू राइट ऑलमोस्ट एवरीथिंग monoamine oxidase next rotenone insensitive NADH insensitive cytochrome C oxidase next fatty acid coenzyme A ligase CoA ligase next intermembranous space इसमें लिखो adenylate kinase nucleoside diphosphokinase next big heading inner membrane enzymes in inner membrane respiratory chain enzymes ATP synthase सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज क्रेब्स साइकिल में आपका आता है ना सक्सिनिक एसिड वहां पे एंजाइम प्रेजेंट होता है क्रेब्स साइकिल आपका इधर ही होती है माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन है ना दैट इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज सबस्ट्रेट लेवल होती है ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट डिहाइड्रोजनेज बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरिक एसिड
dehydrogenase, dehydrogenase, etc. Last matrix, malate, fumarase. क्रेब्स साइकिल आपकी मैट्रिक्स में होती है, तो जो जो कंपाउंड है वो सारे इधर ही पाए जाते हैं. मैलिक एसिड बनता है FMO, है ना. फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्सलेट, है ना. तो फ्यूमेरेज, मैलेज एंड राइट डाउन मैलेट, फ्यूमेरेज, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस, आइसोसिट्रेस डिहाइड्रोजनेस, C6I O oxalosuccinate and ecotinic acid. So ecotinase, ACOTINASE, ecotinase. फिर सबसे मेजर कंपाउंड क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं? क्रेब्स साइकिल इज आल्सो नोन एज CAC, सिट्रिक एसिड साइकिल. क्रेब्स साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं ना. तो राइट डाउन सिट्रेट सिंथेस, सिट्रेट सिंथेस. ठीक है, राइट वन पॉइंट. विद इन द रियल्म ऑफ दिस ऑर्गेनेल, दो भी अगर आप लिख के आ रहे हो अल्ट्रा स्ट्रक्चर में, मोर देन सफिशिएंट. एक सेक्टर डाल देना. ठीक है, इनर मेम्ब्रेन में तो वैसे भी दो ही पाए जाते हैं, इनर इंटरमेम्ब्रेन स्पेसेस, एडेनाइलेट साइकाइलेज और न्यूक्लियस. ये आपका यूज होता है एटीपी फॉर्मेशन में. ये अलाउ करता है ट्रांसपोर्ट. ठीक है, राइट डाउन. विद इन द रियल्म ऑफ दिस ऑर्गेनेल, रियल्म, REALM, within the realm of this organelle have more than 70 enzymes and coenzymes. With more than 70 enzymes and coenzymes, as well as numerous cofactors, ठीक है. नेक्स्ट डाउन माइटोकॉन्ड्रिया एज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल. हेडिंग डालो माइटोकॉन्ड्रिया एज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल. by virtue of the fact, by virtue, VIRTUE, by so we have already discussed that why the mitochondria is called semi-autonomous organelles. Tell me why. Shivam, explain it. All नहीं होगा, फिर तो autonomous हो जाएगा. हाँ, उससे क्या होगा? थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी वे में बताओ. सपोज अगर मैं खुद से लिखने को बोलूं, so we know the reason behind, right? थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी टर्म में बताओ. Okay, so okay, that which is okay. So that protein synthesis. So mitochondria ये exactly यही word है. But इसको अगर मैं suppose थोड़ा सा describe करेंगे. So mitochondria is one of that very functional component. It's a very important component of the cell organelle. So majority of the functions is also performed by the mitochondria itself. It requires continuously upgradation or that activity. And we know that with the structure of the mitochondria, it does have that its own ribosomes and its own DNA. ठीक है, एनर्जी यहीं से आपकी बन रही है और एनर्जी भी यहीं से बन रही है. सो टू कंटिन्यूअस स्ट्रक्चरली परफॉर्म दैट, जो भी आपकी प्रोटीन रिक्वायर्ड होती है ना, मेजॉरिटी लाइक हाफ ऑफ देम प्रोटीन्स आर दे आर मेकिंग बाय देमसेल्व्स, है ना. जैसे कि रिमेंबर गाइस, अगर जब हमने लिखा था द राइबोसोम्स आर मेनली टू टाइप्स. एक आपके फ्री साइटोसोलिक पड़े रहते हैं और एक आपके ऑर्गन से एसोसिएटेड रहते हैं. सो अभी सपोज दैट हम यहाँ पे देख रहे हैं, व्हाट वी आर सीइंग दैट दीस राइबोसोम्स आर एक्चुअली फ्रीली अवेलेबल इन द मैट्रिक्स, है ना. माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में तो फ्रीली अवेलेबल है, ऑल्दो दे आर एसोसिएटेड. So what was the difference between that free cytosolic ribosomes and ribosomes attached with the ER? क्या difference था उनमें? बहुत बेसिक सा डिफरेंस था. दो राइबोसोम दोनों ही आपके प्रोटीन बनाएंगे. हाँ जी, दोनों ही बनाएंगे क्योंकि प्रोटीन्स आपके रिक्वायर्ड होती हैं. प्रोटीन्स बनती ही राइबोसोम्स के अटैचमेंट के थ्रू द mRNA. ठीक है. सो दोज जो फ्रीली अवेलेबल साइटोसोलिक, बेटर से cytosolic ribosomes generally form those protein which are required intracellularly only.
उनको ट्रांसपोर्ट नहीं करना होता है ना. साइटोसोलिक राइबोसोम्स मेक दोज प्रोटीन विच आर नॉट रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट. मतलब उनका फंक्शन भी क्या है, साइटोसोल में ही है. वाइल जो हमारे ईआर के थ्रू जो हमारे मेम्ब्रेन बन रहा है, उनका प्रोटीन वो प्रोटीन है जो हमें ट्रांसपोर्ट करनी है. अब देखो यहाँ पे एक तरीके से मैट्रिक्स में फ्रीली अवेलेबल है. सो कैन वी से दैट ये वाले जो राइबोसोम्स है वो जो प्रोटीन बनाएंगे वो इसी माइटोकॉन्ड्रिया के काम के ही यूज में आएंगे, है ना. ऑब्वियस है, अगर वहां का एक पूरे सेल का राइबोसोम उसके प्रोटीन उसकी साइटोसोलिक प्रोटीन में काम आ रहा है, तो यहाँ का राइबोसोम उसकी प्रोटीन में काम आएगा. ठीक है. सो रिक्वायर्ड प्रोटीन एंड ऑब्वियसली डीएनए, उसका जो जेनेटिक मटेरियल वो दोनों ही माइटोकॉन्ड्रिया में इटसेल्फ पाया जाता है. ठीक है. राइट डाउन. by virtue of the रियाग क्या लिखा है, that mitochondria have their own DNA, as well as ribosomes, and are able to synthesize their own proteins. Therefore, the term semi-autonomous organelle is applied to it. However, these biogenesis is highly dependent on the nuclear genome and biosynthetic activity of ground cytoplasm. Full stop. However, there are some differences between mitochondrial protein synthesis and protein synthesized in the cell. First, only 22 different what are the different? First, only 22 different tRNA are present in the mitochondria. Only 22 different tRNA are present in mitochondria. tRNA तो आपके अमीनो एसिड्स लेके आते हैं, है ना. While the 40 tRNA available for cytosolic translation process. Second, दो ही difference है. Second, for most of the genetic codes used by mitochondria is identical with nuclear DNA, but some codons such as, tell me what are the stop codons? We know the concept of the stop codon. क्या होते हैं stop codon? Suppose that ये आपका कोई भी चीज ट्रांसक्राइब हो रहा है ना, अमीनो एसिड ट्रांसक्राइब हो रहा है ट्रांसलेशन प्रोसेस में. तो अगर ये कोडॉन आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी. तो कौन से होते हैं स्टॉप कोडॉन? AUG तो आपका स्टार्ट कोडॉन होता है. देखो स्टार्ट, UAG and UGA.
यस, वेरी गुड। AUG जो होता है, दिस इज अ रिकॉग्निशन ऑफ स्टार्ट कोडॉन। तो AUG, अब कहीं से कोई प्रोसेस स्टार्ट हो रही है, कोई मतलब द ट्रांसलेशन प्रोसेस, सो दैट इज व्हाई जो आपका स्टार्ट कोडॉन होता है, दैट कोड फॉर द मिथ्योनिन। मिथ्योनिन क्या है आपका? एक अमाइनो एसिड है ना। बट आपका जो स्टॉप कोडॉन्स होते हैं, विच आर UAA, UAG एंड UGA, यू हमेशा रहता है क्योंकि आपको ऑफकोर्स आरएनए में पाते हैं, और ये कंटिन्यूस चेंज हो जाता है, AA, AG एंड GA, ठीक है। ये आपके स्टॉप कोडॉन होते हैं। सो डू यू थिंक दे विल कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड? शिवम, स्टार्ट कोडॉन तो सपोज दैट यहाँ ये प्रोसेस था, इसकी पहले भी प्रोसेस थे, लेकिन जब तक कि जो जब राइबोसोम्स होते हैं ना, ये रन करते हैं, जरूरी नहीं कितना लॉन्ग टीआरएनए, तो पहले से ही प्रोसेस शुरू करेंगे, दे विल रन, एंड वेयर दे विल फाउंड दिस AUG, ओनली देन दे विल स्टार्ट द प्रोसेस, अदरवाइज दे विल नॉट। समझ आएगा स्टार्ट कोडॉन का मतलब? सो पहला AUG इज कोडिंग फॉर द, इसीलिए मोस्ट ऑफ द प्रोटीन, नॉट मोस्ट बट ऑल ऑफ द प्रोटीन्स का जो पहला अमाइनो एसिड होगा वो क्या होगा आपका? मिथ्योनिन। ये समझ आया? नहीं आया तो पूछना है ना, हाँ कर दोगे फिर ऐसे ही। देखो जेनेटिक कोडॉन को वैसे तो हम लोग ये बात पढ़ेंगे, mRNA आपका बना DNA से, DNA से आपका RNA बनता है विद द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे DNA किससे मिलकर बना है? ऑफ कोर्स कोडॉन से, इसी से तो मिलकर बना, यही तो आपका DNA है ना। DNA में आपका यही तो, DNA से जो RNA बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? mRNA, ठीक। तो इस mRNA जो RNA बनता है वो ऑब्वियसली क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द DNA, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द DNA। तो DNA के पास सपोज दैट यहाँ पे G था, सपोज दैट यहाँ पे DNA का जो कॉम्प्लीमेंट्री था वो ये G था, तो इसके सामने जो mRNA बनेगा वो क्या होगा? C, है ना। यहाँ पे सपोज दैट DNA का T था, इसी को तो कॉपी करता है, ये तो होता है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, है ना। सपोज दैट DNA में यहाँ पे T था, तो mRNA में यहाँ पे क्या बनेगा? T का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? A, तो mRNA यहाँ पे क्या बन गया? A। कोई भी रैंडम बताओ, AUGC, कोई भी यहाँ पे बताओ DNA में क्या होना चाहिए? दिन में यू होता है, यू ही पकड़ना था चार में, कोई भी रैंडम बताओ। A बाइंड्स विद द T, G बाइंड्स विद द C। DNA में ये होता है, ठीक है, RNA में ये होता है, ठीक है। DNA में आपका T होता है A के साथ, RNA में आपका U होता है, ठीक है। DNA में कोई बताओ नेक्स्ट, शिवम टेल मी एनीथिंग इन दिस और एनी ऑफ दिस अबाउट, यू बस मत बताना। C कर दे, C के सामने कौन बाइंड होगा? G, यहाँ पे G कर दी, यहाँ पे G कर देते, ठीक है। ऐसे ही करके जो पूरी कोडॉन, यही तो आपका DNA है, DNA इज मेड अप ऑफ द कोडॉन ओनली, है ना। तो आपका RNA बना, यहाँ पे आपने कुछ भी कर दिया, फिर कर दो मान लो U। अब मान लो अब U कब आ रहा है? अब मान लो यहाँ पे DNA में A था, ठीक है, मान लो इसको ऐसे कंसीडर करते हैं, यहाँ पे DNA में क्या था? A था। अगर DNA से DNA बन रहा होता, जो कि आपका रेप्लिकेशन प्रोसेस है, तो यहाँ पे क्या लगता है आपका? T, क्योंकि DNA में A के सामने क्या लगता है? T। बट हमारा बन क्या रहा है? हम लोग प्रोसेस कौन सी कर रहे हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में हम क्या बना रहे हैं? RNA। तब A के सामने यहाँ पे T तो लगेगा नहीं, क्या लगेगा? समझ आ गया? यही प्रोसेस, इसी को पूरी कॉपी होते 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 mRNA बन जाता है, ठीक है। तो अभी हमें कहीं भी नहीं मिल रहा है, अब इसके पहले भी बहुत सपोजेट कोडॉन्स थे, ठीक है। अब यहाँ पे लार्जर सब यूनिट आई राइबोसोम्स की, ठीक है। जैसे कि मान लो आपको एक आपने क्या किया, फूलों की माला देखी है ना, एक लॉन्ग गार्लैंड देखा है, तो वहां पे एक पर्टिकुलर नोट बांधते हैं। जब सपोज आप मार्केट से लेके आते हो तो अक्सर फूल आपको फ्री नहीं मिलते, ऐसे मिलते हैं, है ना, दिवाली वाली में हम जाते हैं। तो घर वालों ने अगर बोला कि इस माला से फूल निकाल दो, तो आप कहीं से भी तोड़ दोगे, आप उसको स्कैन करोगे ना, जहां पे गांठ लगी, यहाँ पे जहां पे नॉट लगी वहीं से आप खोलोगे। तो आप एज अ यू स्कैनिंग दिस, क्या स्कैन कर रहे हो? नॉट स्कैन कर रहे हो। वो नॉट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जहां से आपको प्रोसेस फूल निकालने की शुरू करनी है, राइट। सो दैट पर्टिकुलर नॉट जहां से प्रोसेस स्टार्ट होने हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टार्ट कोडॉन। पूरा राइबोसोम आपका स्कैन करता चले आएगा तीन, और इन तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं? इस पर्टिकुलर तीन को फॉर्म में जब हम लोग कर लेते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक कोडॉन्स, ठीक है।
तीन तीन का फॉर्मेशन जेनेटिक कोडॉन्स का होता है, वो हम लोग जब उसमें करेंगे देन विल एक्सप्लेन इट मोर। अब राइबोसोम ने स्कैन किया, यहाँ पे नहीं मिला, इन तीनों में भी नहीं मिला, इन तीनों में भी नहीं मिला। अच्छा, अभी राइबोसोम्स जैसे, राइबोसोम्स के पास भी 3 ही यूनिट होती है, ठीक है, हमने ये लिखा हुआ है वहां पे राइबोसोम वाले स्ट्रक्चर में, ठीक है। अब राइबोसोम ने जैसे ही देखा, ओ ओके फाइन दिस इज एयूजी, इतने सबको वो छोड़कर आ चुका है, क्योंकि यहाँ से वो स्टार्ट नहीं कर सकता, आप कहीं से भी गार्लैंड नहीं कट कर सकते, यू हैव टू हैव फन। पापा ने आपको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जहाँ पे नॉट मिले वहीं से माला खोलना, यू विल फिगर आउट वेयर इज द नॉट, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जैसे इसने लिखा, अब यहाँ पे स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट बनती चली जाएगी। अब यहाँ पे टीआरएनए आएगा, टीआरएनए आएगा। अब ये कोडॉन एक्चुअली, ये जो आपके सिंपल 64 कोडॉन्स होते हैं टोटल, ठीक है, टोटल आपके कितने कोडॉन्स होते हैं 64। 64 कोडॉन्स बनते कैसे हैं? ऐसे, ऐसे जब आप कॉम्बिनेशन बनाओगे ना तो 64 कोडॉन्स बनेंगे, ए ए ए ए ए यू ए ए सी ए ए जी, ठीक है, ऐसे करके टोटल 64 कोडॉन बनते हैं। तुम लोग जेनेटिक कोडॉन में मतलब ये कोडॉन है, 64 कोडॉन्स में जो आप 3 का कॉम्बिनेशन करोगे तो इन दैट 64 कोडॉन्स 61 कोडॉन्स जो होते हैं वो आपके अमाइनो एसिड्स को कोड करते हैं। और आपके कितने टोटल अमाइनो एसिड्स होते हैं 20। तो अगर आप एक एक सबको भी दे रहे हो तभी भी 3 तो मिनिमम जाएंगे ही, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे अमाइनो एसिड होते हैं जिनके पास सिर्फ एक कोडॉन होता है, और बहुत सारे ऐसे अमाइनो एसिड होते हैं जो 4 से 5 कोड लेके रखते हैं, ठीक है। जैसे मिथ्योनिन, मिथ्योनिन सिर्फ एक को कोड करेगा, एयूजी को, इसके अलावा किसी को कोड नहीं करता। जैसे कि ट्रिप्टोफॉन, ट्रिप्टोफॉन के पास मान लो सीजीए भी ट्रिप्टोफॉन को कोड कर रहा है, सीयूजी भी ट्रिप्टोफॉन को ही कोड कर रहा है, सीसीए भी ट्रिप्टोफॉन को कोड कर रहा है, ठीक है। सो ऐसा हो सकता है कि एक अमाइनो एसिड्स मोर देन, अब 64 कोडॉन्स हैं और 20 अमाइनो एसिड्स हैं, तो जो कम होंगे वो ज्यादा लोगों को बताएंगे, है ना। लेकिन एक कोडॉन हमेशा किसी एक अमाइनो एसिड को ही कोड करेगा। जैसे कि ये कोडॉन अगर ट्रिप्टोफॉन को कोड कर रहा है, ठीक है, तो ये सिर्फ ट्रिप्टोफॉन को ही कोड करेगा, ये फिर मेथियोनिन को कोड नहीं कर सकता। कोडॉन दगाबाजी नहीं कर सकते, कोडॉन कैन नॉट बिट्रे, क्योंकि दे आर फिक्स्ड। अगर यही चेंज हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी ना। कोडॉन्स कैन नॉट बिट्रे बट अमाइनो एसिड्स कैन बिट्रे। समझ आ गया, ये कोडॉन का कॉन्सेप्ट है। तो एमआरएनए में ये 3-3 के कोडॉन्स फिक्स हो गया, समझ आ गया। तो 64 में 61 ही होते हैं, बाकी तीन कोडॉन्स जो होते हैं वो किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते। क्यों? प्रोसेस स्टार्ट करना इज इजी बट प्रोसेस को रोकना इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे व्हेन यू आर कमिंग हियर, आपका कंटिन्यूअसली यहाँ पे टीआरएनए से एक चेन अमाइनो एसिड यहाँ पे आके ये फिर आगे बढ़ेगा, यहाँ पे दूसरा अमाइनो एसिड लगेगा, फिर आगे बढ़ेगा तीसरा अमाइनो एसिड करके कंटिन्यूअसली एक अमाइनो एसिड की चेन बनती चली जाती है, ठीक है। और ये अमाइनो एसिड लेके कौन आ रहा है आपका? टीआरएनए। और हम लोग सेल बायोलॉजी रहे, कर हमने ट्रांसलेशन लिया, ठीक है, यही आपका ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है। लास्ट में जब वो फिर से स्कैन करता चला जाएगा, आरएनए कोड है ना, आरएनए क्या है? जीन ही तो है आपका, डीएनए तो अच्छा उसी को कॉम्प्लीमेंट्री है। एक जगह पे आपका कोडॉन आएगा, इन तीनों में से कुछ भी। चला गया यूएए, यूएजी एंड यूजीए, इन तीनों में से कोई भी अगर यहां पर आके मिल गया, अब उसके बाद राइबोसोम्स के पास ये सिग्नल जाता है, नो नीड टू ट्रांसक्राइब मोर अमाइनो। जैसे कि मान लो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के एक अमाइनो एसिड की चेन होती है 141 अमाइनो एसिड। समझ आ गया? सो ये 141 से कंटिन्यूअसली बनने के बाद 142 नहीं बनेगा, क्योंकि वो जीन है ना, वो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी इसने कैरी कर रखी है। तो अब 141 अमाइनो एसिड के बाद यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? इनमें से कोई भी, यूएए, यूजी एंड यूएजी। समझ आ गया? दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टॉप कोड। ऑलराइट, क्या लिखा? हाँ, तो एक जस्ट यस, हाँ, ये तीनों ही स्टॉप कोडॉन है। स्टार्ट कोडॉन आपका ये है और स्टॉप कोडॉन आपका ये है। यहाँ पे एक डाउट सुन लो, जितनी भी यूकैरियोटिक सेल है, कितनी भी यूकैरियोटिक, सब में यही स्टॉप कोडॉन है, सब में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, अब इसका अपना अलग कॉन्सेप्ट है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के पास राइबोसोम्स कौन से होते हैं? प्रोकैरियोट वाले, है ना। तो इसमें जो यूजीए है
जब माइटोकॉन्ड्रिया की वो इसमें ये स्टॉप कोडॉन नहीं करता, इसमें करता है ट्रिप्टोफान। ट्रिप्टोफान आपका क्या है? अमाइनो एसिड। इसीलिए आपकी साइटोसोल की जो प्रोटीन होगी वो अलग होगी थोड़ी सी, बाकी सब सेम है। बाकी जो 64 है वो सब सेम है, बस एक अलग है, एक्चुअली दो तीन अलग। ठीक है, ये वाली क्वालिटी ना हम लोग जेनेटिक कोडॉन में लिखते हैं स्पेसिफिकली। ठीक है, जेनेटिक कोडॉन पे शॉर्ट नोट्स आपके पेपर 2 में बहुत आते हैं। गॉट इट? राइट डाउन। जेनेटिक कोडॉन को कॉन्सेप्ट समझ आया? यही वाला, ये वाला जो है ना, ये वाला पेज, यही आपके जेनेटिक कोडॉन बनाते हैं। ठीक है, क्या लिखा? इज आइडेंटिकल टू दैट यूज्ड बाय, क्या लिखा पॉइंट बताओ? सम कोडॉन सच एज यूजीए, यूजीए ये वाला, which code for stop codon, which code for stop codon in nuclear DNA, in nuclear DNA, while in mitochondrial DNA, while in mitochondrial DNA it code for tryptophan amino acid, it code for tryptophan amino acids. ठीक है, नेक्स्ट राइट राउंड समझ आ गया? बाकी ये दोनों आपके उसमें भी स्टॉप कोडॉन की तरह ही काम कर रहे हैं। ठीक है, राइट राउंड। नेक्स्ट, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट मेक द हेडिंग। Endosymbiotic theory of mitochondria. Mitochondria are semi-autonomous organelle. Mitochondria are semi-autonomous organelle and generally divided by binary fission, like bacteria, full stop. This similarity with the prokaryotes, ब्रैकेट में लिखो, especially with the genetic system, suggest that, bracket close, especially with the genetic system, bracket close, suggest that mitochondria evolved from bacteria. Suggests that mitochondria evolved from bacteria. Next point. Although the biogenesis theory of mitochondria is explained by the two main postulated theory. First, origin from the division of parent mitochondria. Origin from the division of parent mitochondria. Second, de novo synthesis in yeast cell. Next point.
अकॉर्डिंग टू सिम्बायोटिक थ्योरी, या फिर हाँ, अकॉर्डिंग टू सिम्बायोटिक थ्योरी, according to symbiotic theory, comma, proposed by Lan Margulis, Lan, देखो ये भी थ्योरीज हैं आपकी, लेकिन कभी आई नहीं है एग्जाम में, तो अगर मुझे लगेगा तो आई हैव गिवन द पीडीएफ, अदरवाइज आई विल नॉट इवन, कभी पूछा नहीं गया है, ठीक है, ये पूछी गई है, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी स्पेसिफिकली पूछी गई, सो विल टॉक अबाउट दिस नेम, ठीक है, लैन मार्गुस। अब इसमें तो क्या ही है, ये तो सीधे सीधे बता रही है कि पेरेंट सेल डिवाइड होगी बैक्टीरियल फ्यूजन से, वही आपकी बना रही है, ठीक है, लैन मार्गुस, एल वाई डबल एल, यार ये एल वाई है, एल ए नहीं है, लिन मार्गुस, comma, mitochondria are supposed to have evolved, mitochondria are supposed to have evolved, in eukaryotes from endosymbiotic association, from endosymbiotic association of purple sulfur photosynthetic bacteria around 1.5 into 10 to power 9 years ago, ठीक है, अनुष्का याद आया पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, है ना, करा था ना हमने, पर्पल सेक्टोरल बैक्टीरिया अराउंड 1.5 into 10 to power 9 years ago. Next, the captured cell, नेक्स्ट पॉइंट पे लिखना, ये पॉइंट फॉर्म में सारे पॉइंट लिखना, ठीक है, स्टैंजा फॉर्म में तो नहीं लिख रहे हो ना, लिख रहे हो शिवम, अगर यहाँ पे स्टैंजा फॉर्म में लिखोगे ना बच्चा, तो फिर वहां पे एग्जाम में भी यही समझ आएगा, ठीक है, तो जब मैं कह रही हूँ पॉइंट फॉर्म चेंज को, तो चेंज कर दो, ठीक है, नेक्स्ट, द कैप्चर्ड सेल ब्रैकेट में लिखो, एंडोसिम्बायोट, अच्छा इस वर्ड को अगर हम ब्रेक करेंगे तो एंडो मींस समथिंग इनसाइड, और सिम्बायोट मींस दैट मींस सिम्बायोसिक एसोसिएशन, ठीक है, तो जो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया से विच हैव द एबिलिटी टू फॉर्म द ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, उनमें कुछ तो इंटरनलाइज हुआ था, और इसीलिए द माइटोकॉन्ड्रिया स्टिल हैव द प्रोकैरियोटिक जीनोम एंड प्रोकैरियोटिक, तो ये थ्योरी एक्चुअली मोस्ट एक्सेप्टेड है, ठीक है, ब्रैकेट में लिखो एंडोसिम्बायोट bracket close, was then reduced to a functional organelle bound by two membranes, bound by dual membranes, and transmitted cytoplasmically to subsequent generation, full stop, इसी में कंटिन्यू करो, as mitochondrial inheritance, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया सिंगल पेरेंट से आ रही है ना, as mitochondrial inheritance in higher eukaryotes is nearly uniparental, and more precisely maternal inheritance, which shows that they used to consist their own nutrition, as autotrophic bacteria.
Next point. In lower eukaryotes, such as yeast, both parents contribute equal amount of mitochondria to the zygote. Equal amount of mitochondria to the zygote. समझ आ गया एंडोसिम्बायोटिक का कॉन्सेप्ट? कुछ तो था जब वो प्रॉपर यूनिसेलुलर फंक्शन कर रहा था, बैक्टीरिया ज्यादा यूनिसेलुलर, तो उसमें कुछ तो हुआ कि वो एक पर्टिकुलर साइटोप्लाज्म में क्या हुआ, इंटरनलाइज हुआ, और उसने साथ में अपना पूरा स्ट्रक्चर वही रखा, उन्होंने अपना जीनोम भी वही रखा, इसीलिए सर्कुलर डीएनए और राइबोसोम भी रखा. दैट इज व्हाई द माइटोकॉन्ड्रिया हैव द वन ऑफ द वेरी आफ्टर द न्यूक्लियस द मेजर इंपॉर्टेंट फंक्शन इज द माइटोकॉन्ड्रिया. वही आपका एटीपी बना रहा है, और एटीपी इज रिक्वायर्ड टू सस्टेन दैट पर्टिकुलर सेल. समझ आ गया? ठीक है, हेड ऑन. नेक्स्ट, एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी. Evidences in support of this theory. Mitochondria are self-replicating bodies. Mitochondria are self-replicating bodies. Like bacteria. And divides also in a manner of their asexual reproduction, that is binary fission, full stop. This is a double membrane. Next point, this is a double membrane organelle. Where the innermost membrane is very similar to bacterial composition. Justify this statement. जैसे कि बैक्टीरिया की जो वॉल की कॉम्पोजिशन होगी वो आपकी कैसी होगी, हाईली परमिएबल और लेस परमिएबल. दैट इज अ बैक्टीरिया कैसी होगी, हाईली परमिएबल होगी कि लेस परमिएबल होगी? कुछ भी थोड़ी परमिएट कर देगी. तो बैक्टीरिया कहाँ सर्वाइव कर पा रहा है ना? अगर वो हाईली परमिएबल होगी तो क्या होगा, कुछ भी इंटरनलाइज हो रहा है, so it will be very selectively permeable or the less permeable. और वही हमने करा था जब हमने inner membranes की बात करी थी, that inner membrane of the mitochondria is a very selectively permeable, है ना? So that the protein content will be very high. इसीलिए that is one of the reason that bacterial cell wall is made up of mucopeptide. Major component is, समझ आ गया? अभी resemblance है काफी कुछ, ठीक है? हाईली परमिएबल, सॉरी क्या लिखा, composition तो बैक्टीरियल वॉल. नेक्स्ट पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए, comma, structurally similar to bacterial DNA, that is circular DNA. Next point, mitochondrial ribosomes, comma, enzymes and transport system all are similar to those of bacteria. Next, the mitochondria and bacteria also have almost
almost same size, is similar in size. Almost have same size or similar in size. Last point. Protein synthesis in mitochondria. Protein synthesis in mitochondria is inhibited by variety of antibodies. ये तो बहुत ही बेसिक हो गया है ना. is variety of antibodies such as tetracycline, erythromycin, chloramphenicol, so on and so on. That also inhibit the protein synthesis in bacterial ribosomes. But the cytosolic ribosomes of same eukaryotic cell have little or no impact. समझ आ गई. एंडोसिम्बाटिक थ्योरी में कोई कंफ्यूजन नहीं है पक्का. अगर एंडोसिम्बाटिक थ्योरी का किसी दिन सरप्राइज टेस्ट लेंगे तो ले लिया जाएगा. देखो इसको ना समराइज कर लो. व्हाट इज एंडोसिम्बाटिक थ्योरी? दैट मींस कुछ एंडो मतलब कुछ इंटरनलाइज हुआ सिम्बायोटिक रिलेशंस के साथ. जैसे कि इनिशियली वी नो दैट विद द इवोल्यूशन सबसे पहला लाइफ चीज आपकी क्या बनी थी? बैक्टीरिया. ठीक है, बेसिक थी. बैक्टीरिया बिकम द यूनिसेलुलर, राइट. मतलब सारी इंपॉर्टेंट फंक्शन थी उस समय वो परफॉर्म हो रही थी. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती चली गई. ठीक है, उसके बाद जब सबसे पहले क्या बना होगा? प्रोटिस्टा. दैट इज अ यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा. तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया आया. पहले के टाइम पे तो ऑक्सीजन भी नहीं था. ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि इन दैट पर्टिकुलर सेल, ठीक है, इन दैट पर्टिकुलर सेल एक्सेप्ट द न्यूक्लियस, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन? माइटोकॉन्ड्रिया. दैट इज सेमी ऑटोनोमस, दैट हैविंग द सेल्फ रेप्लिकेटिंग एंजाइम. जो आपका इनिशियल सबसे पहला बैक्टीरिया बना होगा वो कैसे डिवाइड होता होगा? सिंपल बाइनरी फिजन से. सबसे पहला जो बैक्टीरिया, सबसे पहली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थी उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ होगा क्या? नहीं ना, जनरेटेड ही होगा. क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब 2 टाइप्स ऑफ गेम. ठीक है, तो सबसे पहले सेल बना वो क्या था आपका? डिवाइडेड विद द बाइनरी फिजन. एंड बस हम यही तो बात कर रहे हैं कि जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया, एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया इन द एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन द origin of or the biogenesis of the mitochondria with the resemblance of the bacteria. That is simple. क्या है इसमें? डीएनए वही टाइप का है, राइबोसोम्स उसी टाइप के हैं, इनर मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी उसी टाइप की है, प्रोटीन जो ऐसे जो एंटीबैक्टीरियल जो इसको प्रॉपर. अब जैसे सपोज कोई अपने कोई किसी को पर्टिकुलरली कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया. ठीक है, अब वो एंटीबायोटिक खा रहा है. एंटीबायोटिक ऑल्सो सब काइंड ऑफ केमिकल्स है ना. अब वो केमिकल किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पे या वायरस पे किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे रोक पा रहे हैं? हाउ द पर्टिकुलर एंटीबैक्टीरिया कैन प्रिवेंट द इन्फेक्शन ऑफ द बैक्टीरिया. कैसे? या तो उसकी सेल वॉल को डिग्रेड करेंगे या तो उसके इंटरनल मैकेनिज्म को इम्पैक्ट करेंगे. तो बैक्टीरिया के पास इंटरनल मैकेनिज्म के नाम पे क्या हो रहा है? राइबोसोम्स ही तो है. प्रोटीन सिंथेसिस तो कर पा रहे हैं. या तो उसकी प्रोटीन सिंथेसिस को डिग्रेड करेंगे या तो उसके जीनोम को डिग्रेड करेंगे या तो उसकी सेल वॉल को. किसी भी सपोज दैट मुझे अगर इनएक्टिव करना हो तो मेरी फंक्शन को इनएक्टिव कर दो, मेरी सेल वॉल को इनएक्टिव कर दो, राइट. तो जो दिस टाइप ऑफ एंटीबैक्टीरिया से वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया में क्या करते थे? उसकी प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते थे. जेनेरिक मटेरियल को इनहिबिट नहीं करते थे, किसी और को नहीं, सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते थे. जब उन एंटीबैक्टीरिया को माइटोकॉन्ड्रियल पे रिएक्ट कराया गया, सो उन्होंने भी वही काम किया. राइबोसोम्स की क्या करी? प्रोटीन सिंथेसिस
इनहिबिट कर। इतनी सिमिलैरिटी क्यों होगी? जब उसका ऑरिजिन होगा जो उसी के साथ। जबकि वही एंटी बैक्टीरिया, अगर सपोज दैट मैंने कोई एंटी बैक्टीरिया खाई है ना, आई हैव टेकन एनी काइंड ऑफ एंटी बैक्टीरिया, जो कि बैक्टीरिया को इम्पैक्ट कर रही है बट मुझे इम्पैक्ट नहीं कर रही है, मतलब मेरे नॉर्मल जो राइबोसोम से जो मेरे नॉर्मल सेल्स पे पड़े उसको इम्पैक्ट नहीं कर रही है। समझ आ गया? इसीलिए so many medicines have also the negative impact. Suppose that particular antibacteria I am taking for the really longer period of time, उसने बैक्टीरियल इन्फेक्शन खत्म कर दिया, उनको मार दिया बिकॉज दैट वाज द टारगेट। ब्लड को पता होता है कौन किसका टारगेट है, स्टिल आई एम टेकिंग इट। तो मेरे ब्लड को या मेरी बॉडी को कौन क्या सिग्नल जा रहा है कि टारगेट तो मैंने फिनिश कर दिया, अब स्टिल ये पर्सन क्यों खा रहा है? दैट मीन्स अब मुझे क्या करना है, अपनी ही माइटोकॉन्ड्रिया को डिग्रेड करना है। ठीक है, इसीलिए किसी भी मेडिसिन के पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट हो सकते हैं। तो जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो वो एक पर्टिकुलर लिमिटेड कम भी नहीं करना है। सपोज दैट मुझे पता है कि दिस पर्टिकुलर एंटीबैक्टीरिया कैन एबल टू किल दिस लेवल ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ मे बी इनटू द 3 months, और मैंने क्या लिया, मैंने 2 months में लिया और मुझे फीवर कम हो गया क्योंकि उसकी नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो मुझे ऑब्वियसली उसके इंपैक्ट कम दिखाई देंगे, तो मैंने छोड़ दिया। बट डॉक्टर को तो पता है ना वो 3 months के लिए काम, फिर उसने वो अपनी दोबारा ग्रोथ करनी। समझ आ गया? इसीलिए कोई भी चीज प्रिस्क्राइब टाइम पे ही लेनी चाहिए। गॉट इट? चलो देखो, अच्छा वन मोर थिंग गाइस, अभी माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शन है, सो जो हम लोग करेंगे ऑक्सीडेटिव और ये फॉस्फोराइलेशन समथिंग लाइक दैट, बट वो हम यहाँ नहीं करेंगे, या तो हम बायोकेमिस्ट्री में कराने की बात करेंगे क्योंकि वहां पे हम लोगों को, या तो हम लोग फिजियोलॉजी में करेंगे। अभी सिर्फ हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया, समझ आ गया माइटोकॉन्ड्रिया का कॉन्सेप्ट? ठीक है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि रेस्पिरेशन जब हम करेंगे so we have to have cover the glycolysis. बायोकेमिस्ट्री में प्रॉपर आपका सब कुछ आता है। बायोकेमिस्ट्री में when we have to talk the glycolysis, we have to talk the Krebs cycle, then we have to have talk about that ATP का synthesis, और सब कुछ हो किसका फंक्शन है, सब कुछ माइटोकॉन्ड्रिया। तो फंक्शन वी विल डू इन देयर, क्योंकि अभी मैं आपको सब कुछ छोटी मोटी में तो वो बायोकेमिस्ट्री से रिलेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, यू विल हैव दैट काइंड ऑफ कंटेंट। नेक्स्ट आपका द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन दैट इज द न्यूक्लियस। क्लोरोप्लास्ट तो में करना ही नहीं है। ठीक है, न्यूक्लियस, it is also called the master of the cell, the master of the cell। अच्छा, एंडोसिम्बायोटिक आप लोग एक बार रिवाइज कर लेना आज घर में जाके। ठीक है, इसको पर्टिकुलर टेस्ट लेने से पहले आई विल नॉट टेल यू बिकॉज वी हैव एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट, तो किसी दिन अपन सरप्राइज टेस्ट करेंगे। स्ट्रक्चर बनाना होगा आप लोगों को, 10 मिनट में तो हो ही जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा, और कुछ रिलेटेबल है भी नहीं इसमें। ठीक है, वील डू वन डे किसी भी दिन हम लोग ले सकते हैं, आज ही बता दें। ठीक है, राइट ऑन, नेक्स्ट वीक में भी किसी दिन, वेडनेसडे के बाद। चलो, न्यूक्लियस, इट इज कॉल्ड द मास्टर ऑफ द सेल ऑर्गेनेल, फुल स्टॉप। इट इज अ कंट्रोलिंग सेंटर, it is the controlling center of the cell, it was first discovered by Robert Brown in the root cell of orchid, अब जैसे कि सपोज दैट अगर एंडोसिम्बायोटिक कॉन्सेप्ट देंगे तो उसमें आप इंट्रोडक्शन किससे करोगे, जिसने आपका स्ट्रक्चर डिस्कवर किया है ना, वी कैन यूज दैट। 3-4 हमने लिखे हैं, उसमें से आप स्ट्रक्चर वाले को, कि वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर और द जेनेसिस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इन द रूट सेल ऑफ ऑर्किड। नेक्स्ट, जे हैमरलिंग सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन, तो हमें डिफॉल्ट मोड में आ जाता है, बट इन्होंने प्लांट में कवर था। नेक्स्ट, जे हैमरलिंग in 1953 conducted the experiment on single cell, the experiment on unicellular organism, नहीं, experiment on single cell लिखो, experiment on single cell
green alga, named acetabularia. आज भी इस पर्टिकुलर एलिगी पे यू नो व्हाट, जितनी भी न्यूक्लियस रिलेटेड रिसर्चेस हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम ऑन दिस एल्गा, ठीक है, एसिटाबुलेरिया। तो जब भी आप क्या लिखोगे, कोई भी किसी भी चीज की इंपॉर्टेंस लिखना हो, यूज दैट, ठीक है, एसिटाबुलेरिया। एंड प्रूव्ड the hereditary role of nucleus and proved the hereditary role of nucleus. The term nucleus come from the Greek word nux, that means nut. Nux, that means nut, which is heart of the cell, which is heart of the cell. It is central and commanding, इसी point पे continue, it is central and commanding and essential for biosynthetic events that characterize the cell type. अगर इतना लिखवाने के बाद आप लोग में से किसी का इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन घटिया हुआ तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी, सीधे सीधे मैं कॉन्सेप्ट पे आती नहीं हूँ, इसीलिए ठीक है कि आप लोगों को इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं झेलनी पड़े, ठीक है। राइट ऑन। इट इज अ वॉल्ट ऑफ VAULT, इट इज वॉल्ट ऑफ genetic information, comma, encoding the past history and future prospect of the cell, Next point. It is double membrane bound, dense protoplasmic body. साइटोप्लाज्मिक क्यों नहीं बोल रहे हम? प्रोटोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म से पहले बन गया है, पहले न्यूक्लियस ही बन रहा है। जब हम लोग सेल डिवीजन की बात करते हैं, है ना, तो पहले हम न्यूक्लियस को सॉर्ट आउट कर लेते हैं, मतलब साइटोप्लाज्म बनने से पहले भी वी हैव टू डिसाइड द न्यूक्लियस वन। तभी तो हम लोग बहुत सारी सेल्स में हम लोग क्या बात करते हैं, न्यूक्लियस स्लैश साइटोप्लाज्मिक रेशियोज, है ना। बहुत सारी सेल्स क्या होती हैं, जनरली वन सेल हैज अ वन न्यूक्लियस, बट सो मेनी सेल्स हैव द मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, है ना। दैट इज अ प्रो मतलब साइटोप्लाज्म से भी पहले बन गया जो प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी दैट कंट्रोल double membrane bound dense protoplasmic body that control cellular metabolism, comma, encloses the genetic information and able to transmit the same to future generations. Hence it is called master organelle. Next, सिंपल अगर न्यूक्लियस आ रहा है तो ये वाला जो पॉइंट हमने लिखा ना, इट इज डबल मेम्ब्रेन समथिंग लाइक दैट, ये स्टांजा उठा के सीधे सीधे 10 मार्कर में लिख सकते हो आप, ठीक है, और कंसाइज में करके। नेक्स्ट अकरेंस
It is present, या nucleus is present in all eukaryotic cells. Nucleus is present in all eukaryotic cells, in both plants and animals. In both plants and animals. However, plants and animals के बाद full stop करना, फिर उसके बाद लिखना however, it is absent in prokaryotic cells. It is absent in prokaryotic cells as they do not contain, as they do not have true nucleus, as they do not have true nucleus, and also certain eukaryotic cells, and also certain eukaryotic cells such as mature sieve tubes, such as mature sieve tubes of higher plants, and mammalian erythrocytes, contain no nucleus. Full stop. In these eukaryotic cells, nuclei are present during the early stages of development. Next point. Generally there is one nucleus in each cells, called mononucleate cells, but this number may vary, full stop, depending upon the number of nuclei, these cells are also called binucleate cells. कोई एग्जांपल बताओ जिसमें बाइन्यूक्लिएट सेल्स होती हो, या कोई ऑर्गेनिज्म बताओ, बेटर से लाइक दैट. टेल मी एनी ऑर्गेनिज्म in which that is two nucleus is found. अच्छा, प्रोटोजोआ है तो बता दिया, आप लोगों के सिलेबस में भी है. प्रोटोजोआ के 4 ही ऑर्गेनिज्म आपके सिलेबस में है. कौन कौन से आप बताई पड़ेगी. आगे का पढ़ रहे हो, पीछे का भूल रहे हो? हाँ, कौन कौन से 4 ऑर्गेनिज्म है? पी फॉर गुड, पी फॉर प्रोटोजोआ. तो पी से 2 ही है, एक प्लाज्मोडियम, दूसरा पैरामीशियम. तो पैरामीशियम में कितने न्यूक्लियस है? एक बड़ा सा मैक्रो न्यूक्लियस और एक छोटू सा. हाँ, अभी दिमाग की बत्ती खुली है. कहाँ है आप लोगों का दिमाग? एनालिसिस बिल्कुल ही आगे पीछे का भूल जाओगे क्या? राइट डाउन. बाइन्यूक्लिएट ब्रैकेट में लिखो, हैविंग 2 न्यूक्लियाई, रिवीजन कभी कभी उठा के, वैसे तो मैं नहीं कहती जनरली, बट समटाइम्स जैसे कि गैप होता है ट्यूसडे को, जस्ट एक बार गो थ्रू हो जाया करो. ठीक है, स्टार्ट भी करोगे ना, अगर जैसे कि मान लो अगर इस ट्यूसडे से आप स्टार्ट कर रहे हो, एक ट्यूसडे उठाओ, डेली नहीं करो रिवीजन. आई एम नॉट सेइंग कि डेली रिवीजन करो, बट जाके एक बार देख लो. ट्यूसडे को बैठो, स्टार्ट कर दो रिवीजन. ठीक है, अगर 2-2 3-3 यूनिट भी एक बार मतलब चैप्टर पेजेस आपके हो रहे हैं तो भी आपका बहुत सही रिवीजन चलेगा. ठीक है, ट्यूसडे को क्या करो, क्लासेस तो होती नहीं है, उसी टाइम पे बैठ के रिवीजन कर दिया. ठीक है, एक्स्ट्रा बर्डन नहीं करना है, बट कम से कम उसके पैरेलल तो चलना है. ठीक है, बाइन्यूक्लिएट सेल्स having, ब्रैकेट में लिखो, having 2 nuclei such as paramecium,
liver cells, bracket close, etc., etc., bracket close. Polynucleate cells contain many nucleus from 3 to 100, contains many nucleus from 3 to 100, full stop. Polynucleated cells in animals, polynucleate cells in animals are known as syncytial cells, are known as syncytial cells. हमने सुना है syncytial epidermis, है ना, मतलब ऐसी लेयर जिसके बहुत सारे न्यूक्लियस है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट. The shape and size of the nucleus, the shape and size of the nucleus normally remains related with shape of the cell, as generally they are spheroid, spherical, spheroid, comma rounded, comma oval, or disc shaped, but also sometimes they are irregular in shape, such as cuboid, multilobed, as in polymorphonuclear leukocytes, as in polymorphonuclear leukocytes. मल्टीपल टाइप्स की होती है ना. जब हम लोग, आप लोग जब 12th में होगी या नीट की प्रिपरेशन करी होगी, तो वी हैव स्टडी, रिमेंबर लाइक दैट, है ना. आपकी एक चश्मे की टाइप होती है, एक बाइलोब्ड होती है, रिमेंबर. एक का न्यूक्लियस ऐसा होता है, इट्स लाइक दिस, चश्मे टाइप के. एक आपकी वन टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट इज लाइक दैट आल्सो. ठीक है, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियो ल्यूकोसाइट्स एंड mammalian epididymal cells. Next week heading structure of nucleus, which will continue tomorrow. Heading डालो बेटा, structure of nucleus. देखो, जितना पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, जो भी है, इकोलॉजी में बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो हमें जनरल 10th सेंस में पता होता है. ट्राई करना कि टेस्ट देना. ठीक है, परफॉर्मेंस हम बाद में कभी देख लेंगे, बट एटलीस्ट टेस्ट बैठना जरूर. नहीं 2 घंटे बैठ पाना, स्टार्ट तो करो. क्या फायदा फिर मेरे इतने सारे बेनिफिट्स देने का अगर सिर्फ मुझे कोर्स ही कवर कराना हो. ठीक है, ट्राई टू एटलीस्ट सिट फॉर दैट 1 आवर बैठोगे, है ना. स्टार्ट देना तो शुरू करोगे. ठीक है, सो दैट इट विल आल्सो हेल्प इन योर मेंस आंसर राइटिंग. ठीक है गाइस, आई होप आप लोग अपनी कॉपी अभी मैं दोनों को सेंड करती हूँ. ठीक है, आप लोग अपनी कॉपी मेल के थ्रू, आई विल सेंड द नंबर्स के थ्रू, आप चेक सेंड कर देना. ठीक है, अपलोड कर देंगे, किसी भी टाइम आप कर सकते हो क्लास के पहले. ठीक है, बाय बाय.